state control of Hindu temples and their property, according to me, by far, is the largest, financially most damaging scam of independent India. You can desecrate one temple, you can burn 10 libraries, but how many human beings are you going to kill? They have stored all of that knowledge in the hardware of their brains, and they are going to go along with their deities, protecting them from place to place, and thereby ensuring that this knowledge is kept alive after centuries of invasions and desecrations. There was not a year, there was not a place where some king or the other was not fighting for dharma. ये धर्म का पार्ट था, मंदिर को बचाना धर्म का पार्ट था. A very good evening to the audience. One thing is formal, that the Ghor Kali Yuga is over. Now, temples matter. Therefore, what we are going to do is, I would be talking of my experiences, and there are a few works which I have done, which I'll try and share with you, and in a conversational mode. Subsequently, I would be requesting Dr. Ranganathan, and followed by Dr. Sampath, and then Mr. Chaturvedi, and Sir would have the final word. And I would also request Sir, give it a finality so that it sums it all for us, for this group. So with this request, Sir, may I? Temples matter, but do they? Because when I am talking to this audience and with this august speakers along with me, I thought for myself, should I not be playing the devil's advocate? That why should temples matter at all? Why should they matter? So, to my rescue comes the great open AI, open artificial intelligence tools. I wondered to myself and thought that maybe let me ask a question to the open AI, knowing well enough that the answers are already tutored and based on the database, which is the reality for the open AI, which it has been exposed to, we are going to get something back. One thing comes back from the OpenAI, and I'm kind of summarizing to cut the longer story short, is it says that if there is a free will, if someone has consciousness and a decision-making capacity, inherent decision-making capacity, then if you go cognitive psychology-wise or developmental psychology-wise, or even quantum and discriminate theories, you will find that there is a requirement for coping up. There's a requirement, a psychological requirement for individuals and groups of individuals to come together with a faith. Now, this is something which the AI is saying, and they are also saying something very categorically. They are saying that, look, when asked, do you believe in something? They say, no, we don't believe in it. We are trained and trained by the database that you gave and supervised, monitored learning that you did to us. Therefore, we don't have consciousness. We don't make free choices, and therefore, we don't get into it. I would flag the word here, consciousness, intentional choices. These are the two. And I will be carrying it over, taking it through in other parts of my conversation. So, while I share my experiences, I would be basically starting from, let's say, Sharada Peeth. That is one of my experiences, where the establishment of Sharada Peeth, which is
in Pakistani occupied Kashmir and its establishment, historically or otherwise. The other panelists are going to be throwing light on it. But that was something that I was associated with. I will straight away go to the other end, which was Gopinath Mandir in Kishorganj, currently in Bangladesh. Now that is one temple which is our Kul Devta, and since before 1947, we were made to come to this side of the this part of the subcontinent. Therefore, that is one temple. Now, first temple was a bit of an exposure as to how to, my role was, of so many people involved in it, was how to ensure that we are Hindus, Indians are able to go and pay their respects to that temple. Gopinath temple is our own temple. There are just a couple of Hindu families, just about 10-15 Hindu families which are there. And whatever was the land which was normally associated with the temple for its economic upkeep, all that has squeezed down to just a very small temple which is just about 5,000 square feet now. And this is something that I'm currently associated with in getting the management to an organization which can handle it. Remaining part of the three experiences that I'm going to share, only one of which at length, but just to in a cursory manner, one of which is having an institutional mechanism for the Hindu community, right from the Karmakand to the philosophical elements. The institutional mechanism is supposed or expected to give a broad standard of understanding in the open setup. So we were talking of open AI, we talk of open data, we talk of open platforms, open sources. Sanatan Dharma is actually formulated in a way which takes into account this openness. But we have no institutional mechanism to bring that out right from the Karmakand, geospatially, up to the institutional level, at the apex level, where if a decision has to be taken of spiritual or dharma, then it will not be one executive organization or a judicial organization or some such organization. It will have those specialists who understand the meaning of the spiritual concepts, the manner in which they have evolved, and in time and space, how they can be interpreted. So this is the institutional mechanism, which again, I'm not going at length, because this is also a work in progress. The other work in progress, again in Varanasi, this was also in Varanasi, and you have the Vidvat Parishad and Akhil Bharatiya Sant Samaj, Vishwa Hindu Parishad, Sangam, all of them are involved in it. The other one is, when we are talking in terms of my own lineage, which is Gopinath Kaviraj ji, they came over to India, and he was a Padma Bhushan, double PhD in Sanskrit, Tantra. Vishuddhananda Paramahansa is still one of the very famous ashrams in, he was the first disciple, and there were certain experiments on Tantra. They were science-based experiments. So my responsibility there is very limited to begin with, which is to digitize the entire concept of the scientific inquiry, and then evolve. So there are many more of his shishyas, and I am just one of them. This is again a work in progress. But something which I would be talking on is at a very mundane level. A very mundane level. I'm not talking of temples
of education, temples of wellness, temples of democracy. Yes, I have had exposure in all of them. But I would be talking of actually making the temples into socio-cultural economic hubs. So we have about 9 lakh odd temples. If you really see the survey, it will talk of 6.45 lakh or otherwise. But along with the help of Survey of India, the statistics that we took, we reach a number of 9 lakh safely. And I'm not talking of the registered temples. I'm talking of the temples which are controlled. They are far lesser in number. So there are approximately 9 lakh temples. And this one again, we wanted to see if the temple is the source of inspiration for the local population. Let's say a local community, a population, a gram panchayat, roughly the population that a typical gram panchayat would have. Where do they go when the childbirth takes place, or birth, death, marriages? Then you have festivals. They go to their local temple. What do they get in return? They get in return something which they can pay for. If they could really pay for something, they could have really gone to a big temple outside, even paid a good dakshina to pujari, and then they could have got a good abhishek done and everything else. But we are talking of 95% of the population, right? They will be able to pay those 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, go to a pujari. That pujari is a part-time there in that temple. He's getting 1,000, 1,500 rupees and also the space to stay. That too, he will have to vacate that space at any point in time. And he's also preparing perhaps for some exam or waiting for an opportunity. As soon as he gets one, he goes. The daily course, or let's say the puja that he offers as a service. We were talking of psychological benefit to the population when they go to the temple, right? So somebody goes for a certain function and there is a mantra, there is a puja padvati, and then there is a prasad. Let's see it from the point of view of the user of the services of temple. Broadly, this happens, and this might take 5 minutes, 10 minutes. And depending on my buying capacity, I would pay 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees for the prasadam. I am paying 15 rupees, but that means a lot to me because I don't earn more than 1,500, 2,000 rupees. And if I do come over to that temple, I pay my respects to the god, goddess, and in return, I expect that I would be blessed. That is my expectation as a common man. And where do these temples fail me? These temples, howsoever local they are, because I'm talking of the local ones, I'm not talking of the 36,000 big ones at all. They don't have priests who know the Padvati. Now, not even the basic ones. They don't have priests who, based on your local requirement, give you a satisfactory puja experience. Now, I'm using these words, they might sound very commercial, but yes, we go with an expectation. Even if we are treated as VVIP and if we are going to Tirupati Devasthali, and then we are made to stay 50 feet away and say, now just have a glimpse and then go away. No, it doesn't work. It doesn't work. If you have worked up the ladder, then you need to get a closer glimpse. You want to sit down and get the blessings of the Lord through the priest who gives you personal attention. All of us have experienced this. Think of the 96 to 97% of the population. I give my 15 rupees, which is hard-earned money. And in return, I am not even satisfied that this person who was the priest gave me back anything.
So that was the first part of it. Second part of it is, the priest is not to be blamed. Like this is just a job. He wants a place to stay. He gets this temple. He gets his 1,000 rupees, 1,500 rupees, whatever these dakshina is coming, dan dakshina, part of which he has to give to either Gram Panchayat, depending on whose temple it is. If it is a private temple, to the private owner, or if it is Gram Panchayat temple, to the Gram Panchayat person, and then be done with it. So this entire project was twofold. One is to bring out the local practices of puja, the Padvati, make it very brief, use mobile apps for that to train the priest in vernacular language. That was one stream of it. And the other stream of it is, then how does he earn enough to lead an honorable life? And while he is earning, is he able to give any services to the local population, was the other part of it. So there was a startup, fintech startup. It was the financial services, last mile financial services, along with implementation of all the government schemes, which many a times they don't even get to know. I mean, it doesn't kind of penetrate the entire rural folk. So based on that, we used about 3 temples in the vicinity of Varanasi, about 5 temples in and around Patna, few temples in Mathura, and none of them are famous, let me tell you. They are all in the fringes, very small temples. Hamlets are the ones which are, being supported by such temples. And you won't believe, this is a startup. So it's not something like, it's not a government department which says, nahi, chalo, chalu karo, dekhte hain kya hota hai. No. Their ROR, which is return of rate of return or the revenue that they get back, on the investment they were making on each of the priests after training, they could get that back within 6 months' time. And the priest, within 6 months, could start earning between 30 to 35,000 per month. Now, this is something which we have already done. And this is something which has been successful. So, what I wanted to emphasize on is that, yes, at the local level, temples which used to be historically, and there I would definitely request Dr. Sampath to tell us about how these temples, what was the role of a temple historically in different geospatial, histories. But to the extent, I am not a history student, so pardon me for my ignorance, they used to play a very, very nodal role of not just giving the social inputs, cultural inputs, but also the economic inputs, because there was a lot of earning that was associated. Now, through dharma, that's a different debate. But that was what was happening. Deviations are there, aberrations are there, that's a different matter. So, this was the background which we wanted to actually capture, which means the inherent requirement of individuals to go to the temple. Please remember, when we talk of the child wanting to learn, we are tapping the curiosity of the child. When we are wanting wellness, or rather health to be successful, we are tapping on the immunity of the individual. When we are wanting individuals and societies to grow, we are tapping the enterprise of the individual. And here, we are tapping on something very natural. The individual's need to actually associate with his own self, but a larger, bigger Brahma. So that was what we wanted to work on. And it gives me great pleasure to tell you that, yes, we have been a success, even in the commercial economic modeling that we do in the current times. So this was one bit of a story which I thought I will begin with, and then request
Professor Ranganathan to take over. Thank you. Thank you very much, Dr. Goswami, and the organizers for inviting me for this wonderful event, made even more special than sharing the stage with such illustrious people as not only my good friend Vikram Sampath, but also the fountainhead of the knowledge, especially emanating from JNU, Professor Kapil Kapoor. It's a real honor, not just a pleasure, to be sharing the stage with him. Thank you so much. Thank you. Let me delve straight into something that is, I would say, quite dear to me. And I'm just a worker for a cause that has been taken up for years, perhaps decades, by so many people before me. Notably, my contemporaries, T.R. Ramesh and J. Sai Deepak, and so many others who felt that temples matter. So I would say that this, the title of this discussion itself encompasses it's almost as if everything has been condensed into these two words, that yes, temples matter. For the simple reason that state control of Hindu temples and their property, according to me, by far, is the largest, financially most damaging scam of independent India. That it not only continues but flourishes under the present government is a sad reflection of how politicians in our country treat Hindus. Even using the petroleum sector as a cash cow pales in comparison to the loot and pillaging of Hindu temples. And I have not paid anyone to clap. This is an applause I'm not a politician, so I really thank very much, because this is a matter that is so close to our hearts, and to see the present dispensation ignore it as vociferously and as in a blasé fashion as the previous government is very hurtful. I do not know how and why it is beyond the limits of comprehension of the flag bearers of secularism that if you truly believe that religion should be kept out of state, the corollary is equally applicable, that the state should be kept out of religion. But is it? Secularism is total separation of religion and state. Total. There are half a dozen articles and amendments and directive principles in our constitution that make it plural, not secular. In fact, the word secular was inserted in our preamble by Indira Gandhi during the emergency. It was absent from Ambedkar's constitution. Our state declares itself to be secular, but is shamelessly not so, regulating, governing, and controlling as it does Hindu places of worship. So yes, temples matter. Hindu temples have been, for thousands of years, the centers of worship, learning, community living, trade and economy, statecraft, and even defense. Every invader has known that to dismantle India, you need to dismantle first this temple ecosystem. And every invader has managed it. What sets the British apart is that they, as invaders, managed to also pass this dismantling on to those who they ruled and subjugated. And now, the latter are continuing with the dismantling. Right from the Madras Regulation 7, 1817 to Religious Endowments Act 1863 to the Religious and Charitable Endowments Act 1925 to the Hindu Religious and Endowments Act 1927 to Act 12, 1935 to the Post-Independence Hindu Religious and Charitable Endowments Act 1951. Hindus have been at the receiving end of state-sponsored loot and pillaging of their places of worship. And when the 1951 legislation was challenged in the Madras High Court, and subsequently the Supreme Court, and most of the draconian provisions of the 1951 Act struck down, the Congress that was in power then quickly passed the Hindu Religious and Charitable Endowments Act 1959, snubbing
the court decree. 2 years ago, the same Madras High Court dismissed a petition challenging the constitutional validity of this act, commenting that, quote, management of temples has got nothing to do with the right to worship. A Hindu can worship as much as he wants, unquote. And I have to quote the honorable judges verbatim because there already is a contempt court against me, so I don't want to have another criminal contempt of court. So this is a verbatim quote. But I ask you, if the Congress can bring in a legislation to control Hindu temples, one that still stands, why cannot the present government bring in a legislation to free Hindu temples? A petition by Swami Paramatmananda and Swami Dayananda Saraswati is pending in the Supreme Court since 2012. For more than 10 years, they can allow midnight hearings for granting mercy petitions to terrorists, but cannot spare time for this. In his plea, Swamiji gave the example of the grand Ardhanareshwara temples in Tiruchenagode, Tamil Nadu. Even though the temple generates more than 1 crore on annual income, the budget earmarked for conducting daily puja and performing rituals is a mere 1 lakh. Swami Dayananda Saraswati did not live to see the day his beloved temples would be wrested from state control. He passed away in 2015. Governments of just 10 states control more than 110,000 Hindu temples. Tamil Nadu Temple Trust alone own 478,000 acres of temple land. Tamil Nadu government controls 36,425 temples and 56 mutts. For Karnataka, the figure is 34,566. Is this what we call secularism? The communist state of Kerala has 5 Devaswom boards: Travancore, Guruvayur, Cochin, Malabar, and Kudalmanikam. Together, they manage 3,058 temples. The communists, for whom religion is supposedly the opium of the masses, are controlling Hindu temples and their boards, appointing board members on their whims and fancies. Many either belong to the Communist Party or are card-carrying members of it. Why? What business is it of the state to levy an administrative charge from anywhere between 5% to 21% on Hindu temples in the name of audit? What business is it of the state to dictate how many times a puja is to be conducted and who is to conduct it, and who is qualified to be the priest and what is going to be the procedure of worship? What business is it of the state to control tens of thousands of acres of temple land and then set rent for it? The loss to Hindu temples on account of this alone is estimated over decades to be in lakhs of crores, according to the activist and litigant T.R. Ramesh. The Tamil Nadu government, that should be earning a minimum of 6,000 crores per annum from the 2.44 crore square feet of temple land it controls, earns a mere 58 crores, not even 1%. Kapaleshwarar temple is one of the richest temples in Tamil Nadu, owning more than 600 acres of prime property in Chennai. State records show it has 473 defaulters, with most of its land now encroached. And these are the estimates of only one state. Because of this loss in revenue generation, Hindu temples are not able to spend money on what they would really like to spend money on. Opening up Ved Pathshalas, schools, colleges, Goshalas, fellowships and scholarships, orphanages, Hindu cultural and religious centers, all things and causes other religions and their places of worship spend their money on unencumbered. Why should only Hindus and Hindu temples suffer? Only in India can you step aside and watch as the state appoints non-Hindus, Muslims like Firhad Hakim, Christians like Vanagalpudi Anita, on boards that control Hindu temples. Only here will we remain silent as temple idols are stolen, temple property auctioned, a whole temple-driven ecosystem and way of life dismantled. Assault on temples has turned into an assault on Hinduism itself. Imagine a Hindu priest or a politician controlling and dictating how St. Francis Church or the Jama Masjid should be run. If that happens, perhaps our judiciary would indeed conduct a midnight hearing crying death of secularism. What is amusing is that the very same people who derisively call India a Hindu Rashtra
are totally silent on state control of Hindu places of worship. They never stop to ask, how on earth is this secularism? You can provide Hajj subsidy for decades, use taxpayers' money to host grand iftar parties, fund AMU that has only 1.4% Dalit students and 0.25% Dalit teachers, plunder state coffers to pay monthly salaries to tens of thousands of Maulvis, ask government-run UGC to fund minority institutions that keep 50% seats reserved for Christians, step in to overturn a Supreme Court judgment just to appease Muslims, leech thousands of crores exclusively for Hindu temples, control tens of thousands of acres of Hindu temple land, spend hundreds of crores of taxpayers' money for the Kartarpur corridor. Are these not instances of the state interfering or succumbing to the demands of religion? Is this secularism? The great Mahakaleshwar temple, its revenue, its realty, is tightly controlled by the Madhya Pradesh state government, right now under the BJP, through the Mahakaleshwar Mandir Act 1982. From appointing pujaris down to even the size of the prasadam laddu. Down south, Tirupati's hundi collections from April to September 2022 alone amount to 782 crores. Now the government valuation of its property is out. 7,123 acres valued at 85,705 crores. But secularism means this temple comes under the Religious Institutions and Charitable Endowments Act. Until a High Court order that was issued recently, Andhra Pradesh Hindu Religious Institutions Act used to force temples that earn 5 lakhs or more to pay 21.5% of their income to the endowments department. Now the state has issued orders to set up Dharmika Parishads with draconian powers to form temple trust boards and extend land lease. Is this secularism? More than 2 years have gone by since the Tamil Nadu government informed the Madras High Court that 11,999 temples under its control do not have enough money to perform even a single puja. But then again I ask, largely overriding the Supreme Court verdict, if the Congress can bring in a legislation to control Hindu temples in 1959, one that still stands, why could not the present government bring in a legislation to override it in the last 9 years? Why has it brought in even more Hindu temples under state control than was achieved by the previous dispensation? Why does the present government gloat on constructing temple corridors like the one in Kashi at the cost of 339 crores? When it could have relinquished control over Hindu temples and allowed the latter to fund hundreds of such corridors over the length and breadth of this country? It's 1/2 of the bi-monthly collections of Tirupati. As far as I am concerned, a Hindu temple should be publicly listed as a company. After all, it supplies a product that people buy, peace of mind and reassurance. And unlike other companies that need to constantly refine or come up with better products, a temple's product has not changed in millennia, and it never will. Indians should be able to buy stake in it and make the temple richer. The richer the temple becomes through public trading, the more it will do for the society. Schools, hospitals, orphanages, roads, housing, the list goes on. The more it does for the society, the more it will garner donations. With temples being publicly listed, the ready excuse of the government that who will control the temple after we relinquish control becomes untenable. Let the government tax the temple's wealth. No issues with that. At least the wealth generated by the temple will belong to the temple itself. At least then, the Hindus will not be so blatantly discriminated in their own countries. So yes, temples matter, and it's about time that the government realizes this. Thank you so much. Good evening again. I'm the least qualified to be on this panel, but I succumb to the pressure of Neeraji for, of course, one important reason: to be sandwiched between two giant intellects. That is something that very few people would let that opportunity pass. And after an impassioned speech like that by Anand, even in 30 seconds, I don't think I can add much more value to what he has said. But being true to my profession of being a historian, historically, I'll just draw a few examples as to why temples actually mattered always in our civilization. And part of it, I think, in my intervention in the previous session to earlier, I covered in the whole
episode of the invasion of Mohammad Ghazni at Somnath, and maybe recount it in a little more detail. Now, fundamentally, I feel, temples, Hindu temple structures are different from those of other religions for multiple reasons. It is not just a building, it is not made of brick and mortar. There are many dimensions to its existence, and that's how we have seen it as a civilization. Unlike a mosque or a place where people congregate to pray, here there is an element of congregation, there is an element of community coming together. But along with that, I think what distinguishes our temples is that whole concept of Prana Pratishtha, which is done to the murti, and what is hitherto just a piece of stone is imbued with divinity. It is imbued with a reflection of what we would see as the ultimate truth. And that concept then suddenly, transforms this place from a mundane, building or a statue to something which is much more esoteric, much more divine. And we do that even when we bring the Ganpati home. It is not just a clay idol of worship. The first thing that a person does before you start the worship is the mantras to give Pran Pratishtha to the Murti, so that you invite the deity to come and reside in that idol of clay. So the temple does not belong to anybody, it belongs to the deity. It is the house of the deity, the rules, the traditions that particular deity. So now there's a lot of debate on social media of Bali Vidhan, should it be changed, and all of that in Kamakhya in Assam, while the government is going on another mindless corridor being created at a very, very important Shakti Peeth. And someone being a Devi Upasak, I find it revolting that many of those structures might be destroyed in the process, or interference in the Bali Vidhan there. That is the rules and regulations of that deity. It has been laid down in the Tantric traditions, in the Agama Shastras or the Tantric Shastras of that particular deity, of which we have no right to interfere. We are just partaking, and that is why all of it is called a darshan. You're going and meeting the lord of that house. So you don't have a right to make alterations to the house of the person you are going and visiting. So I think that fundamental difference itself of an Abrahamic view of a place of worship as opposed to a Sanatanic view of what a place of worship is, that it is the residing area of a deity whom you worship, and therefore you need to subscribe to the rules, to the traditions that have been laid down over centuries by the deity itself through his or her practitioners. That is very important. And I think what is, so one is the spiritual aspect itself. And right from Adi Shankaracharya to everyone consecrated that deity or did that Prana Pratishtha through the establishment of the Sri Chakra at the root of the idol itself. Now, those of us who are again practitioners of the Devi Upasana know that this is like the entire cosmos being represented in a three-dimensional form, the Sri Chakra, which has elements of all the 5 elements being represented, a microcosm of the universe, all the chakras of the body. So the temple structures itself, the way they were designed, be it the Nagara style of the north or the Dravida style of the south, or the mixed, what is called as the mixed style, which brings both the elements, which is more in the Deccan, Karnataka, and other places, thanks to the Chalukyan rulers who started it. All of these have some of these, agamas which mention how the structure needs to be made in accordance with these spiritual, geometries and the way it brings your energy into that consecrated space. The Vastu Purusha of the temple itself is somebody who directly correlates to the 5 elements and also the different chakras of the body. So the esoteric part, the spiritual dimension is one element of a temple and its importance. The other thing which Anand also referred to is
the temple economy itself. How in the past kings gave lands, gave grants to temples, and how that sustained an entire economy in villages, where they were made all it was a place of congregation for the entire community, and it gave employment and jobs to millions who depended on the temple economy for their own livelihood as well. And the center also for cultural activities, music, dance, painting, architecture, all of that flourishing in the precincts of this temple. Right, and so you have the Brihadeeshwara temple, the big temple of Tanjavur, which is 1,000 years old, built by Rajaraja Chola, where on the walls of the temple you have the names of about 400 Devadasi singers and dancers who performed in the temple, their names, their emoluments, their mothers' names, their addresses, all of that actually inscribed on the walls of the temple to show how even something like a music and dance performance in the evening was such an important element of the temple environment. So there was in our religion, everything is multidimensional. So there's dharma, artha, kama, all of that leading eventually to moksha. So all these elements of enjoyment of life, of the senses, that was equally important, and it was not a renunciation of those to get to moksha, but the senses need to enjoy a lovely musical or dance performance, which is a tribute to the deity in whose house you're performing, and that is also well documented on the walls of the temple. And as you go, even if you see the structure of the old temples, particularly what have retained in the south of India, why is it called the Garbha Griha? It's almost like the womb of the mother. And through that, there are so many, and that's how the Sri Chakra is also constructed. If you see the multiple avaranas that it has 9 avaranas or enclosures. And as you go from the grosser elements to the subtlest point, there is just a bindu, which is a point at the 9th avarana, which is where Shiva and Shakti are supposed to come in union. So from the grossest element to the subtlest element, if you see the temple architecture too, there's a big prakara outside where you take a pradakshina, then the mandapa, the Ranga mandapa where all this dance and all of this happens, then a smaller enclosure, then a smaller, everything then becomes subtle, and then you have the final, the subtlest part, which is the Garbhagriha, where you have the deity residing. So just imagine the multiple dimensions which have been preserved as in the way the temple is constructed, the way it operates on a day-to-day level. As I said, a place for community get-together, a place of education, also a place of lot of social and charitable work. Anand mentioned about T.R. Ramesh, and I think recently he had come out with some findings about how a particular temple in Tamil Nadu talks about entire hospitals which were built by the Chola kings, which they have inscribed on the walls. How many hospitals need to be built, how many nurses and doctors need to be assigned to how many people. So the welfare of the citizens also becoming such an important element of the temple's functioning itself was there. And no wonder, and this ties into my intervention earlier, that to break the spine of our civilization, this had to be broken first. The fundamental thing which brought our society together, which brought our communities together, if that is desecrated, it was assumed that the civilization too will collapse. But there too, the kind of resistance that we have put, not only the physical strength and resistance we have put, but as I said earlier, the common citizens of this great land, the manner in which they've defended this because they thought it was important for them. As mentioned earlier, when Mohammad Ghazni goes to Somnath to destroy it, to find 50,000 common Hindus there with rudimentary weapons standing there and defending that temple, that speaks a lot about how important it was. If it was just another structure for them, they would have just allowed it to break. And how that those memories of those, that destruction kept coming back in the psyche of our civilization, kept getting rebuilt. Professor Meenakshi Jain's book on Flight of Deities
talks, it's a moving account of how our ancestors never gave up. Deities would resurface from one part of the country to the other. They would be hidden in wells, dug up and buried in deserts, from the Mughal kingdom to the Rajput domains. How deities would be literally transported, a false deity kept in front of the main deity so that the invader came and desecrated the false deity, and the main deity was preserved somewhere behind. These are examples of such resilience. And why was this resilience? Because temples mattered. If it was just yet another structure, it would not have mattered so much to our ancestors. And I think so. The place also being one of education, where all the learning happened, the Ved Patshalas that he mentioned, all of that also being something that the temple was an important center of. Another reason why it was destroyed. But I think one reason why many people ask me, after so many invasions, how is it that our knowledge systems have not, gone off the record? When Nalanda was burnt by Bakhtiyar Khilji, it said the number of manuscripts there was so immense that it burned for 6 months. If they had burnt so much of our wealth of knowledge, we still have whatever we have today in various fields, whether it's science, technology, alchemy, Ayurveda, yoga, whatever else, it still remains thanks to some of these centers which were there, and largely the educated class who transmitted this knowledge through word of mouth. You can desecrate one temple, you can burn 10 libraries, but how many human beings are you going to kill? They have stored all of that knowledge in the hardware of their brains, and they are going to go along with their deities, protecting them from place to place, and thereby ensuring that this knowledge is kept alive after centuries of invasions and desecrations. And I think our ancestors understood this. That's why there was always a sense to resurrect those. And we see that right up to the 18th century too. Dr. Goswami mentioned Adi Shankaracharya. He earmarked literally the contours of Bharatvarsha by establishing those 4 mutts in the 4 cardinal points. There was no reason. Here was a young man from Kerala. He could have done all that he did in the short life that he lived in his village in Kaladi in Kerala. There was no need for him to establish a southern point at Sringeri, an eastern point at Puri, a northern point at Badrinath, and then a western point at Dwarka, thereby literally earmarking the sacred geography of this entire country. The very fact that all our Shakti Pithas are scattered, 52 Shakti Pithas that are scattered across this sacred geography. The fact that the 12 Jyotirlingas, the 7 Puris, the 4 Dhams, all of these are also scattered across the length and breadth of India, show that, along with patriotism, there's also, to give away any sense of parochialism. If I, coming from Karnataka, feel that my state is the most sacred place, there are 100 others in this land which are more or equally, if not more sacred than my own. So people went on pilgrimages across different parts. Every part on the way was sacred. A river was sacred, a mountain was sacred, a forest was sacred. Everything becomes a temple in itself. Thereby environmental consciousness and protection of environment, which is so important in pre-colonial societies, that also is something that was deeply understood. All our gods are shown with vahans, which I think we cover all species of animals and birds and everything, because everything is sacred. So what all can be then destroyed to make us cut off that umbilical cord from our past, our civilization? And this consciousness was there even in the 18th century, when someone like an Ahilyabai Holkar of Indore managed to resurrect all the temples at a time when Western imperialism, the East India Company being at its peak in the 18th century, she deciding, just like Adi Shankaracharya, to resurrect. She could have just
stuck on to her little kingdom in Indore, in the center of India. But all the 12 Jyotirlingas she consecrated back, whether it was Kashi or Somnath is what we know, but she did it for all the Jyotirlingas. She brought water from the Ganga to all the, temples in southern India, thereby creating a cultural union between these places. All the 4 dhams and all of that recreated, again emphasizing that the temple structures or the temple concept is not just, it has those dimensions of spirituality, of community get together, of education, of culture, but also in some way giving us that sense of identity as a nation and bringing us all together, in that common civilizational bond, which is why it has always historically been under attack, continuing till this date, as Anand so eloquently put. And one literally feels so tragic when one hears that even now, 75 years after independence, and in a supposed Hindu Rashtra where all the minorities are being gobbled up, as his forthcoming book is going to talk more about how Hindus are probably the 8th class citizens of this Hindu Rashtra, where even our basic rights to go back to our roots, to reclaim what is rightfully ours, what has been bequeathed to us by our ancestors, even to do that, we have to have centuries of fights in courts to get back the Ram Janmabhoomi. It took 150 years of struggle. Barring that one episode of 1992, I think the rest of the campaign was peaceful, where what is rightfully ours, we have to literally, fight, beg, do all kinds of acrobatics to get things back. So it's a sad state. And unless and until today, we, as Hindus, if one do not unite, and as Indians, we do not unite and say these are important structures of our past. In whichever way, if you are an atheist, as our Darwinian atheist is, for him it may not have, all those spiritual aspects may not have that much meaning as an astika may have. But from a historical viewpoint, or from the economic viewpoint, or from a civilizational viewpoint, it is important for him. If I, as a person who's a deeply, practicing kind of a, Hindu, for me, the spiritual aspect would matter more. So each of us, in our own ways, and for those who are not tagged as Hindu and someone with some other who belong to some other religion, these are parts of our Indian civilizational heritage. They are part of our history. They are what our ancestors have built. So temples matter to everybody, Indian, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jain, Sikh, whoever lives in India, for all these dimensions, whether they are Astik or Nastik, whether they follow any other faith in their personal life. I think on all these dimensions, these are very, very valuable markers of our collective memory, of our civilizational heritage, and the struggle of our ancestors. Thank you. Very well said. Temples being the hub of all science, economics, sociology, that's what is the summary of it. Of course, that reminds me, the communism as a religion, it has a holy man, it has a holy book, it has holy geography. It is the competition of other religion that it is currently fighting, actually. So I would now be requesting Mr. Chaturvedi, just one brief introduction of Mr. Chaturvedi. He has himself kind of worked on temples and their, I should say, independence from the government control. Therefore, I would request you to just share your experience. Namaskar everyone. My name is Ranjeet Chaturvedi, Pathak. मैं अभी मथुरा से आया. I want to speak in Hindi क्योंकि मैं सनातनी ड्रेस में भी आया हूँ और हम मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं. So, if I may, मैं स्वयं एक तीर्थ स्थल को बिलोंग करता हूँ. मेरा जन्म वृंदावन में हुआ था. And as you know, मेरे सरनेम में वेद आते हैं. कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से कहते हैं तुम चतुर हो, चतुर्वेद. तो हमको उनको क्लियर करना पड़ता है कि हम चतुर नहीं, वो चतुर है, मतलब 4. So, और हमारी मतलब मेरी बहुत क्लोज हिंदू भाई बहनी मेरे साथ ये मजाक करते हैं. जहाँ तक मजाक रहता है तब तक ठीक है, बट जब हम
ऐसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं और हम ये कहते हैं टेम्पल्स मैटर, तो ज़रा इतना समझना चाहिए कि भाई ये टेम्पल्स है क्या, व्हाट इज़ अ टेम्पल। टेम्पल का अगर अंग्रेजी के शब्द को अगर आप हिंदी में करेंगे तो उसका अर्थ आएगा, ट्रांसलेशन आएगा मंदिर। और मंदिर का अगर आप अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़ा सिंपल सा अर्थ है उसका। उसका मतलब है घर, मतलब घर। कहते हैं ना, घर एक मंदिर, मन एक मंदिर। और शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी मंदिर, मतलब उनका वो स्थान है। उसका एक दूसरा शब्द भी प्रयोग किया जाता है, देवालय, देवालय। मंदिरों से पहले क्या था? जब मंदिर नहीं थे, मानो एक जगह है वहां पर अभी एक मंदिर बन गया, जैसे हमारे वृंदावन में बहुत खूबसूरत खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल्स बन रहे हैं, बट आई एम सॉरी, मैं उनको मंदिर नहीं कहता, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। मंदिर से पहले आस्था के लिए इंसान तीर्थ जाया करता था, तीर्थाटन करता था, पर्यटन नहीं करता था। तो हमने आज पहली बात तो तीर्थाटन और पर्यटन में हम लोग खो चुके हैं। देयर इज नो डिविजन ऑफ दैट लाइन, वो भेद ही खत्म हो चुका है। चलो घूमने चलते हैं, कहाँ? केदारनाथ चलते हैं। रास्ते में 12 बियर का एक कैन का वो लिया, रास्ते में जा रहे हैं, अरे गंगा जी नहा लेते हैं। पानी कम पड़ जाता है तो गंगा जी के जल से विस्की में भी मिला करके पी लेते हैं। हिंदू ही करते हैं। तो आस्था तो है ही नहीं। तो मंदिर जो है, जिसको हम देवता का घर कहते हैं, उससे पहले जो तीर्थ हुआ करते थे, जहां जाकर के लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, अनेक उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य जी पूरे देश में भटके, वल्लभाचार्य जी पूरे देश में भटके, रामानुजाचार्य जी पूरे देश में भटके। ऐसे न ऐसे किसी पॉइंट पर जाकर के किसी न किसी आश्रम में या किसी गुरु स्थान पर या किसी ऐसे एक दिव्य स्थान पर जहां स्वयं देवता, परमात्मा, कोई स्पेशल फोर्स का ऐसा वहां पर कुछ ना कुछ था, जिससे कि वो जगह का जो वातावरण था उसमें कुछ अद्भुत सा था, अलौकिक सा था, जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जब वो वहां पहुंचते थे तो उनकी चेतना उजागर होती थी, वो ब्रह्म से कनेक्ट करते थे, कॉस्मिक, उनके अंतर की आत्मा से कोई उनको जागृतता मिलती थी। दे यूज्ड टू फील डिवाइन। तो ऐसे स्थान जब हुए, तो ऐसे स्थानों पर ऋषि मुनि, मैं आपसे वेदों से पहले की बात कर रहा हूं। यहां पर आजकल एक्चुअली क्या है, नियो वैदिक बात होती है, बट प्री वैदिक बात तो होती ही नहीं है। तो जब ये तीर्थ स्थल हुआ करते थे, और इन तीर्थों की महिमा कैसे बनी, 51 शक्तिपीठ की महिमा क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा क्या है, ब्रज की महिमा क्या है, द्वारका की महिमा क्या है, श्रीनाथ जी की महिमा क्या है, जगन्नाथपुरी की महिमा क्या है, तिरुपति बालाजी की महिमा क्या है। ये महिमाओं के स्थल थे। जब इन महिमाओं के स्थल, जब यहां के लोगों ने, जब मनुष्य ने इनकी महिमा को जाना, और सारे मंदिरों को बाय द वे मनुष्य ने ही बनाया है, कोई भी भगवान ने आकर के नहीं बोला ये मेरा घर है, ये मैंने मंदिर बनाया। भगवान कहता है मैं कैलाश में हूं, आना है तो पैदल चल करके आओ, बड़ा कठिन रास्ता है, तुम यहां रह भी नहीं सकते। तो हम तो एक तरफ बात करते हैं कि हमें मंदिर में एंट्री मिले, वहां पर कैलाश में कहता है तुम आओ, रास्ते में मर भी सकते हो, ये सोच करके रखना। और केदारनाथ में हमको एग्जाम्पल दे दिया, अभी भी उत्तराखंड एग्जाम्पल दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि राजाओं ने और हम जैसे, आपके जैसे ही मनुष्यों ने, जिनके अंदर थोड़ी आस्था जगी। आस्था अंदर से जब जगती है तो समझ लीजिए कि आपको ऊपर से या पीछे से या साइड से, किसी भी दिशा से आपको एक कृपा मिली है, ग्रेस जिसको बोलते हैं, कि भाई मैं हूं, मैं वहां हूं। तो राजा ने सोचा मैं मंदिर बना दूं। अब जब मैं मंदिर बना ही रहा हूं तो क्यों ना मैं उसको एक ग्रैंड मंदिर बनाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर भी एक ग्रैंड मंदिर बना है। अब जैसे कि हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, जब उनको एक रोड बनानी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो सोचते हैं इसको कैसे बड़े से बड़ा करें जिसका कि इसका बजट बढ़े। अब बजट बढ़ेगा तो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा होगा, ज़्यादा लोग भी काम करेंगे। कोई हंसा शायद, जो लोग, अच्छा बात सच है, काम भी अच्छा होगा, लोगों को व्यापार मिलेगा, टर्न अराउंड अच्छा होगा, चीज़ ग्रैंड बनेगी, एक्सप्रेस वे बनेंगे, एयरपोर्ट छोटा भी बन सकता है, बहुत बड़ा बनाएंगे, बिल्डिंग नॉर्मल भी बन सकती है, नहीं बुर्ज खलीफा बनाएंगे, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड,
तो उनमें ये भी किसी ने बोला, क्योंकि होड़ होती थी ना कि अरे शिव मंदिर बन रहा है, वहां पर विष्णु मंदिर ऐसा बना, अरे मैं ऐसा बनाऊंगा। अब जब तुम बनाओगे तो दीवारें खाली तो रख नहीं सकते, तो क्या डालें इसमें? तो वहां पर कोई लर्नेड लोग आए, कहते हैं कि सर ये देवता से रिलेटेड ना इतनी सारी कहानियां, इतना सब दिखा देते हैं, चलो तो क्या चाहिए? राजमिस्त्री चाहिए, बुलाओ कारीगरों को। अब कारीगर लगे। तो इस चीज में अच्छा क्या हुआ? इस चीज में अच्छा ये हुआ कि आप किसी भी मंदिर में अगर जाएंगे, पुराने मंदिर में, मॉडर्न मंदिरों में नहीं, अगर आप मॉडर्न मंदिरों में भी चलो अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छी स्टोरीज दिखा रहे हैं, बट वो आस्था की जगह नहीं है। वो आपको एक अच्छा सा डिपिक्शन दिखा सकते हैं किसी भी चीज का, बट आस्था की जगह के लिए आपको उन्हीं जगहों पर जाना पड़ेगा जिनका वर्णन तीर्थों से जोड़ा गया है, जहां पर स्वयं देवता प्रकट हुए। आज अगर मैं इस रोड पर एक मंदिर बना दूं तो क्या हनुमान जी आकर के इसमें बैठ जाएंगे? नहीं भाई। मैं राम जी का मंदिर बना दूं बहुत सुंदर सा, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा संस्थाओं के, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली। हम लोगों की रोजी रोटी चलती थी आप जैसे टूरिस्टों की वजह से। जब आप लोग आते थे, यात्री जब आप लोग आते थे तीर्थों पर, तो मेरे पूर्वज उनको पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह सब करवा करके, तो हमको पंडा बोला जाता था। और पंडा शब्द डिग्रेडेड शब्द है, सही शब्द है पुरोहित, जो रावण श्री राम के बने थे, पुरोहित। तो जो अभी हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर निलोत्पल जी ने बोला कि मैं जुड़ा हुआ हूं इस लड़ाई से, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई अनंत से चली आ रही है। अभी हम लोग उसका एक सूक्ष्म में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक संस्था है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, जो विश्व के, जो अपने देश के 82 ऐसे तीर्थ हैं जिनके जो पुरोहित हैं, उन सारे पुरोहितों का एक लोकल ग्रुप होता है और उसका एक मिक्स करके एक टॉप ग्रुप होता है, जिसका हरिद्वार में गंगा सभा में उनका हेडक्वार्टर्स है। और उनका मुद्दा यही है कि भाई आप तीर्थ और तीर्थ पुरोहित को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थ की महिमा बताने वाला ही तीर्थ पुरोहित होता है। और ये पुरोहित ऑब्वियसली पुजारी ही होते हैं। यही वो पुरोहित है जिन्होंने उस धरोहर को संभाल के रखा। जब अटैक हुए तो इनको मूर्तियां लेकर के भागना पड़ा, जैसा कि आपने कहा। मैं महालक्ष्मी के मंदिर में गया, वहां के मैं पुरोहितों से मिला, मैंने बोला स्टोरी क्या है? मैंने बोला कभी तुम पुजारी बनते हो, कभी ये बनता है। तो कहते हैं जब ये हमने मूर्ति को छुपाया था और जब अटैक हुआ तो उनके घर वालों को मार दिया। तो राजा ने आकर के बोल दिया कि भाई तुम्हारी फैमिली ने ये किया है, इसकी धरोहर अब तुम संभालोगे, क्योंकि तुमने ये सैक्रिफाइस और बलिदान दिया इस मूर्ति के लिए, महालक्ष्मी की मूर्ति के लिए, अब तुम इसका ख्याल रखो। जैसे जैसे परंपराएं आती गई, उसकी फैमिली बढ़ती गई, तो उसको ओसरा बोलते हैं। तो कभी आप किसी टेंपल में जाओगे, आपको कोई पुजारी दिखेगा, 4 दिन बाद जाओगे कोई और दिखेगा। इसका मतलब ये कि उसी परंपरा में, उसी ट्रेडिशन में जितने भी लोग थे, उन्होंने आपस में, हिंदी में, और मैं मुंबई रहता हूं तो बोलते हैं कि मांडवाली करके बोल दिया कि भाई ये 3 दिन मेरे मैं पूजा करूंगा, ये दिन तू पूजा करेगा। तो उनका अपना इंटरनल इकोनॉमिक सिस्टम है। सो कमिंग बैक टू कि टेंपल से पहले क्या था? तीर्थ थे, तीर्थों पर मंदिर बनाए गए। मंदिर बड़ी अच्छी सोच से बनाए गए। मंदिर इसीलिए नहीं बनाए गए कि आदमी ये सोचे कि मैं वहां पर जाकर के मुझे भगवान मिल जाएगा। नहीं, भगवान तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, ये सनातन कहता है। प्रूव नहीं कर सकता, काश कर सकता होता, अगर समय होता तो यहीं पर भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं, इसी कमरे में। लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए आप लोगों को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर आपका वो एक स्थान है जहां पर आप जाकर के अपने मन को शांत करते हो। आप ये जो दिन में हम लोग जब जाते हैं, कभी घर जा रहे हैं, कभी ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम मंदिर से क्रॉस करते हैं तो बस ऐसे दिख करके ऐसे कर देते हैं। एक बार कहीं पर भगवान का फोटो दिख जाता है तो ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या? कि आपने उस क्षण के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपने परमेश्वर के प्रति अपना 1 सेकंड दिया। मंदिर इसीलिए मैटर भी करते हैं क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो, वहां पर जाकर के चाहे आप 4 मिनट दो, चाहे 5 मिनट दो, चाहे आप 10 मिनट दो, चाहे आप 1 क्षण के लिए खड़े हो जाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी इतनी आस्था बनी कि आपने 2 कदम बढ़ाए उस देवालय की तरफ जाने के लिए। दैट इज व्हाट मैटर्स। कृपा यही होती है। हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हजारों साल पुरानी हमारे यहां पर बनी हुई हैं। उसका संचालन एक अलग विषय है। उसका संचालन कैसे होगा? सरकार उसमें घुसती है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है।
गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है आस्था की जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट और आस्था का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आस्था की आप वैटिकन देख लीजिए, आप मक्का मदीना देख लीजिए। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर जब आस्था खत्म होती जाती है तो तीर्थों की जो मर्यादा है वो भी खत्म होती जाती है। हम अपने ही तीर्थों को मार रहे हैं। हम वहां पर अर्बनाइजेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उन तीर्थों को बर्बाद कर रहे हैं। बट ये कुछ नया नहीं है, पहले कोई और कर रहा था, आज हम स्वयं कर रहे हैं। किसी की इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं लेकिन स्वयं कर रहे हैं, और ये पार्ट एंड पार्ट है प्रोसेस का। तो टेम्पल्स मैटर, ऑफ कोर्स दे मैटर, क्योंकि हम कौन होते हैं बताने वाले टेम्पल मैटर? हमसे हज़ारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे इतने बड़े बड़े बना करके चले गए, तो जब उनके लिए मैटर किया तो हम तो उन्हीं की संतान है, तो हमारे लिए भी मैटर करता ही है। बस फ़र्क इतना है कि हम प्रत्येक जन अपने अंदर ये मान करके चलें कि भगवान वहाँ पर नहीं मिलता, वहाँ भगवान की मूर्ति की, प्रतिमा की सेवा की जाती है, ये शो करने के लिए कि देखिए सुबह 4 बजे भस्म आरती होगी, रात को 12 बजे ये होगा, निरंतर हम लगे रहेंगे, यहाँ पर अभिषेक होता रहेगा, यहाँ पर निरंतर प्रसाद बढ़ता रहेगा, यहाँ पर मंत्रोच्चारण होता रहेगा। ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर इसके अलावा और कोई कार्य होता ही नहीं। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे, शमशान घाट, वहाँ पर आप जाओगे तो आपका मन एकदम बदल जाएगा। वहाँ पर और कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ मुर्दा फूकता रहता है। वहां पर जाकर के आप कुछ और सोच करके दिखा दो, नहीं सोच पाओगे। ऐसे ही जिस एक जगह पर दैट प्लेस इज फॉर दैट। अगर आप योगा के लिए, अगर आप जॉगिंग के लिए जाओगे किसी गार्डन में, तो वहां पर आप एक्सरसाइज करने ही जाओगे। आप वहां पर जाकर के चटिया बजा करके आप सो नहीं जाओगे और बाकी के लोग जॉगिंग कर रहे हैं। कुछ लोग पार्क्स में भी करते हैं। सो द पॉइंट इज टेम्पल्स मैटर। टेम्पल्स से पहले तीर्थ थे। तीर्थों का पहले हमको सबसे पहले तीर्थों का सम्मान करना सीखना है। तीर्थों की महिमा, जो अभी डॉक्टर नीलोत्पल ने कहा था कि आप एआई में कुछ भी फीड करते हो वो आपको वही देता है जो उसमें डेटा है। अभी धीरे धीरे करके कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। हम लोग इतने सारे तीर्थों की महिमा का बखान कर रहे हैं, इंटरनेट पर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रही है। मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को और जानकारी मिलती जा रही है। नई युवा पीढ़ी को भी, मेरे को भी जानकारी मिलती जाती है। मेरे को डेली जानकारी मिलती है नई, किसी ना किसी मंदिर या तीर्थ के बारे में। तो यही चल रहा है, हम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप मंदिर जाते हो तो आप ये ना सोचो कि मैं 5 रुपये दूँ और 15 रुपये दूँ, 50 रुपये दूँ या 50,000 रुपये दूँ और भगवान की मुझे कृपा मिल जाए। नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी नहीं मिलेगी। एक कॉन्सेप्ट होता है गुप्त दान का, वो भी एक होता है। आप मत करो, आप चाहे मंदिर में चढ़ावा दो, वो उसके आपने दिया है, आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप पे लक्ष्मी है आप पे। आप सोचते हो कि अगर मैं खाने पर भी देता हूं, मैं 10 रुपये इस पर भी देता हूं, चल यार यहाँ पर आया, मैंने जब आया हूं तो मैंने टिकट के भी तो पैसे दिए, मैंने रिक्शा वाले को भी तो पैसे दिए, मैंने बाहर खड़ा हुआ एक भिखारी था, मैंने उसको भी 1 रुपया दिया, तो मैं अंदर आ रहा हूं। तो ये लोग इतनी सेवा करते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं, चलो 5 रुपये मैंने यहां पर भी दे दिए। बट मैं इस 5 रुपये के एक्सपेक्ट में ये करूं तो ये तो वही बात हो गई कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर 3 करोड़ लोगों ने वोट किया तो हर कोई वोटर जाके बोलता है अरे मुझे मोदी जी के साथ में सेल्फी चाहिए। ऐसा कैसे? फिर बोलते हैं कि हमको धक्का मार के हमको आगे करते हैं। अरे जब प्राइम मिनिस्टर चलता है तो आपकी रोड रोक दी जाती है, आप तो उनको टच नहीं कर सकते अगर उनकी इच्छा हो तो। हाँ, प्रधानमंत्री की कृपा होगी कि आकर के आपसे हाथ मिला ले, वो बात अलग है। बट दैट इज, अगर आप पर वो कृपा है तो ईश्वर को अगर आना होगा ना तो आपके घर में ही आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपकी संतान के रूप में आ जाएंगे, आपके सपनों में आ जाएंगे। बट उसके लिए आस्था जगनी है। तो जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर हमको एक रिमाइंडर है कि भाई ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। यहां पर आकर के लेट अस बी अ रिमाइंडर कि इसको छोड़ करके, इस गली में से निकल के जब हम अपनी दुनिया में जाएं तो यहां पर भी हमको लौट करके कभी कभी आना है, क्योंकि यहां पर हमारे देवताओं की, जिनको हम पूजते हैं, उनकी सेवा निरंतर चलती रहती है। सो अब नए मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, क्या है, मेरे सिर्फ ब्रज में ही 5,500 मंदिर हैं। तो हमने एक सजेशन दिया ब्रज तीर्थ विकास परिषद को। हमने कहा गुजरात में कितना अच्छा एक चीज चली है, आप सारे मंदिरों को लेकर के, जितने भी मंदिर हैं उनकी एक काउंटिंग बनाओ, सबको काउंटिंग बना करके सबको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी मेंबरशिप बना करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दो। दिस इज द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। सारे मंदिर उसके मेंबर है, उसकी एक वेबसाइट बन जाए और उसी में से एक कमेटी बना लो, उसी में से सब कुछ कर लो और सरकार को बोलो प्लीज गो आउट। हाँ, उसमें डीएम को रखो, सरकार का एक प्रतिनिधि रखो जो ये चेक करे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा मंदिरों में, क्योंकि मंदिर में कभी कभी गलत भी होता है और ये बहुत शर्म की बात है।
गलती एक होती है, भुगतना सबको पड़ता है। दिस इज वेरी बैड। 2 साल पहले ब्रज में राधा अष्टमी के 10वें दिन पर एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ मथुरा में, जिसको हम कहते हैं रास लीला, प्रेम की नगरी। मैं अपने मथुरा की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ऐसी चीज अगर वैटिकन और मक्का मदीना में अगर कोई करने की चेष्टा करे ना, तो ये गलती किसकी है? ये गलती उन लोगों की है जिसने उस आदमी को सजा नहीं दी। हमको जाकर के लड़ना पड़ा, हम एसओजी के पास गए, मैं स्वयं गया, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस वाले, उन सबके पास गया, दिल्ली छोड़ करके भागा जब मुझे पता चला। मैंने बोला भाई मैं दिल्ली में पढ़ता था, ये सब निर्भया और ये सब हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, हमारे आस्था के प्रतीक के जो चिन्ह है, जो वो जगह है, यहां पर भी होने लगेगा क्या? ऐसा है, इसका मतलब वी आर डिस्ट्रॉयड। फिर क्या टेम्पल और क्या भगवान, सब छोड़ो, फिर तो पशु हो, इंसान तो छोड़ दो, फिर तो पशु की श्रेणी में आ गए। लेकिन नहीं, इंसाफ मिला। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया कि उसको फांसी की सजा मिल गई। ये होता है, ये अच्छा हुआ, बट उसके लिए लड़ाई लड़ी गई, जो भी है। बट पॉइंट क्या है, ऐसी नौबत आई क्यों? अब आ गई है और हो गया है। तो अभिमन्यु उस समय पर एक था, आज हजारों लाखों करोड़ों अभिमन्यु हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब अभिमन्यु हैं, सब चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और एक ही मुद्दे पर लगे हुए हैं। और ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। तो मंदिर, हमारे जो देवताओं के जो घर हैं उसके प्रतीक हैं, कितने सुंदर बने हुए हैं, किसने बनाए, क्या बनाए, मैं उस समय हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट वो है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या थी, क्या हो गई है, उससे अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में ऐसी सुझाव, ऐसे ही योद्धा जो अभिमन्यु, जो टेबल पर बैठे हुए हैं यहाँ पर ऊपर मंच पर, यही वो योद्धा है, यही वो अभिमन्यु है। बस फर्क क्या है, इन अभिमन्युओं को, हमारी ये बात को, क्या हम चक्रव्यूह में मारे जाएंगे, क्या हम इस युद्ध को जीतेंगे? हकीकत तो यह है कि युद्ध अभिमन्यु का साइड ही जीतेगा, अभिमन्यु नहीं जीतेगा, उसका साइड जीतेगा। तो हम लोग जो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, धर्म के प्रेमी, सनातन प्रेमी और दूसरे धर्मों के भी प्रेमी, किसी के अगेंस्ट नहीं है, परंतु ये जो मंदिर है, हम लोग इस बात को फैलाएं, इस माध्यम से सब जगह पर फैलाएं कि इनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बनना चाहिए। डॉक्टर निरुल अपनी तरफ से एक पहल चला रहे हैं, देखो छोटा मंदिर बना, अगर इसमें अगर नहीं अच्छा काम करेगा तो मंदिर खंडर हो जाएगा, फिर बाद में आकर के कोई बुराई करेगा, अरे ये मंदिर बना दिया फिर इसको चलाया नहीं। तो कोई इंसान ये तो सोच रहा है कि यार इसका एक सस्टेनेबल मॉडल बने। चलो मैं तिरुपति बालाजी और उस सब में इंटरफेयर नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बट ये जो छोटे छोटे हैं, कल को अगर यहाँ पर हट जाएगा तो कोई इसमें बैठ करके जुआ खेलेगा, कोई इसमें दारू पिएगा, ये अड्डा बन जाएगा सारे गलत कामों का। तो इसका कोई कुछ तो करे। तो मैं बड़े को छोड़ दिया, मैं छोटे पर लग गया। तो यही चीजें करनी है। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी मंदिर में आपको कुछ गलत होता हुआ देखे, तो आप सीधा उसको बोलो कि भाई ये गलत है, राइट? उसको यूज करके आप अपने आप को बदनाम मत करो कि अरे यार मैं तो वहां पर गया था, उस मंदिर में था, इस मंदिर में था। नो, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। सो मंदिर तो मैटर करते ही हैं, हजारों साल से करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्वेश्चन और प्रश्न बस ये उठता है कि हम लोग, जो लोग इस मुद्दे पर बैठ करके यहां सम्मिलित हुए हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति उस पर क्या कर सकता है। अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के माध्यम से हम उस लड़ाई से जुड़े। गोवर्धन के मंदिर का यूपी सरकार अधिग्रहण कर रही थी, गोवर्धन के मंदिर का, बताइए। तो उसमें लड़े लोग, घर पर आ गए, औरतें बाहर आ गई, कहते हैं कि तुम पागल हो, मतलब सरकार को, कल को तुम किसी को, जिस आदमी को मंत्र बोलना नहीं आता उसको लाकर क्या बिठा दोगे इस पर, उसको पूछना महिमा क्या है ब्रज की, उसको बोलो गोवर्धन जी की मतलब महिमा क्या है, वो नहीं बता सकता। आप फिर गूगल करोगे, उसको 4 पेज बोलोगे, इसको पढ़ लेना, जो आता है उसको ये सुना देना, तो वो गाइड हो गया, वो पुरोहित नहीं हुआ। मैं जो चारों धाम का भी अधिग्रहण हो रहा था, उसमें भी लड़ाई लड़ी गई, उसको वापस कराया गया उस ऑर्डर को। नहीं तो वहां पर भी पहाड़ों पर पहुंच जाते, वहां पर गवर्नमेंट का ऑफिस बन जाता, कोई एसडीएम लेकर के संभाल रहा होता। ये लड़ाई निरंतर चालू रहेगी। आप प्राउड होइए अपने ब्यूटीफुल मंदिरों के लैंडस्केप से, तीर्थों से, आप उनसे प्रेम करिए। आप उन जगहों को ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए आया हूं। आप जाते हो, आप मंदिर में लाइन में मत खड़े हो, आप 10 मिनट मंदिर के बाहर उसके प्रांगण में बैठ जाओ, बस उसकी वाइब लो आराम से। आप ये सोचो ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था, अंदर कौन सी मूर्ति है। जहां जहां प्रभु ने लीलाएं की हैं, ईश्वर ने, वहां पर ही मंदिर सबसे पहले बने थे।
जैसे शक्तिपीठ बने थे, ज्योतिर्लिंग बने थे हमारे मथुरा में, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी वहाँ पर श्री कृष्ण के उसी रूप का बना है मंदिर। तो वहाँ पर जाकर के लेट इट बी अ रिमाइंडर कि भगवान की लीला की क्या थी उस समय पर। सो ट्राई टू बी वन विद गॉड, डोंट गो टू अ टेम्पल टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, टेम्पल्स वोंट गिव यू एनीथिंग, दे जस्ट गिव यू पीस ऑफ माइंड एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कॉन्ग्रीगेट। हम लोग सब लोग एक जगह पर मिलते हैं, उत्सव होते हैं, वहाँ पर एक यूनिटी का भी एक माहौल बनता है। इस बात से देवता खुश होते हैं कि देखो मेरे सारे बच्चे मेरी एक जगह पर एक साथ आए। एंड मैं बस इतना ही कहूँगा एंड थैंक यू नीरा जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबको नमस्कार। इतनी बातें हुई हैं कि समझ नहीं आता कि क्या क्या, या कुछ कहने को भी है या क्या क्या कहें। एक दो बातें बड़ी मोटी हैं। इस्लाम ने इजिप्ट को, स्पेन को 10 साल में, इजिप्ट को 20 साल में, सीरिया को 15 साल में और ईरान को, जो कि ग्रेट पर्शियन एम्पायर, 30 साल में डिफीट करके कन्वर्ट कर दिया। ईरान की डेप्थ जो है ऑलमोस्ट 2000 माइल्स है, पर ईरान के बॉर्डर से दिल्ली 900 मील है। उस 900 मील में इस्लाम को 400 साल लगे। ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ इतने बड़े बड़े साम्राज्य देश इस्लाम ने ख़त्म कर दिए, पर जो हमारी सनातन सभ्यता, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसको वो आज तक ख़त्म नहीं कर सके। सोलोमन का टेम्पल तोड़ा, ज्यूज वर प्रैक्टिकली डिस्प्लेस्ड एंड फिनिश्ड, बेबीलोन में ले गए। ओल्ड टेस्टामेंट में, साम्स में है, उन प्रिजनर्स को कहा गया कि खुशी के गीत सुनाओ उन ज्यूज को। एंड द ज्यूज हैव नॉट फॉरगॉटन नॉर फॉरगिवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सोलोमन टेम्पल, बिकॉज दे हैड ओनली वन। हमारे यहाँ, जय सर ने कहा, लाखों तोड़े गए और लाखों बनाए गए। आज भी बन रहे हैं अक्षरधाम, और इधर दक्षिण दिल्ली में एक के बाद एक विशाल मंदिर बन रहे हैं। मेरी माँ कहा करती थी, मैं उनसे पूछता था मध्यकाल का इतिहास, तो वो कहती थी मध्यकाल में वो मंदिर तोड़ते रहते थे, हम मंदिर बनाते रहते थे। ये तो पहली बात। हमारी सभ्यता ही केवल एक सभ्यता है 46 मानव सभ्यताओं में से, जो पुराने जमाने से आज तक जीवित है और अभी भी जिंदा है अच्छी तरह से। तो कुछ तो कारण है। सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि हम ज्ञान केंद्रित सभ्यता हैं, बेसिकली ज्ञान केंद्रित हैं। और वो ज्ञान में, अब ज्ञान में आप जानते हैं, अगर मध्वाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह देखें तो वो 4 वाकों से शुरू करके आदि शंकर तक जाते हैं। हमारे लिए सब विचार, सब सिद्धांत, क्योंकि हम एक ईश्वरवादी, एक ही सच है, एक ही किताब है, एक ही आस्था का केंद्र है, हम वो नहीं है। हम हाईली डाइवर्सिफाइड। आप मंदिर तोड़ दीजिए, मंदिर तोड़ क्यों दीजिए? मैं तो 4-5 मंदिरों में गया हूँ सिर्फ, बड़े बड़े। द्वारका गया, रामेश्वरम गया, तिरुपति गया, ज्ञानवापी गया, और शायद एक आधा और कहीं गया, जगन्नाथपुरी गया। मुझे सिर्फ 2 मंदिरों में आभास हुआ कि कोई शक्ति है, 2 मंदिरों में, एक द्वारका में और एक जगन्नाथपुरी में। बाकी जगह मुझे नहीं हुई, और कहीं भी मुझे पैसे नहीं देने पड़े। मैं पहला ये
ये जो बात है, देखिए 2 लेवल है हमारे देश में। एक तो एक हम लोग हैं पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे, हम लोग इंटेलेक्चुअलाइज बहुत करते हैं, वी आर द लर्नेड ट्रेडिशन। और एक पॉपुलर लेवल है। अगर आप हरिद्वार जाएं तो हरिद्वार सुबह 6 बजे गाड़ियां आती हैं और दूर दूर से, राजस्थान से, गुजरात से आम आदमी, लेबर क्लास, ये पटड़ियाँ, वो पोटली बांधी हुई है, पोटली लेके वहाँ आते हैं, स्टेशन पर ही ईंटें लगा के अपना खाना बनाते हैं, पैदल चलते हैं, परमार्थ निकेतन जाते हैं, ऋषिकेश के मंदिरों में जाते हैं। हर छोटे बड़े मंदिर में जो 10 पैसे 5 पैसे होते हैं वो देते जाते हैं। वो कभी प्रश्न नहीं करते कि ये क्या है, कौन सा है, क्या है, देते जाते हैं। परमार्थ निकेतन और जो वहाँ बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे कमरों के रेट्स हैं। आप अगर गंगा किनारे का लेंगे तो 2000 दीजिए, आप यहाँ वहाँ दीजिए। तो वो सोचते हैं कि हम धर्म को बचा रहे हैं। धर्म को वो नहीं बचा रहे, धर्म को वो गरीब आदमी बचाता है जो पोटली बांध के जाता है और हर जगह पे जाके उसके लिए वो जाता क्यों है? वो जैसे भाई साहब ने कहा, वो तीर्थ यात्रा पे जाता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता जीवंत रही है 2 चीज़ों से, तीर्थ यात्रा और कथा प्रवचन परंपरा, जो बड़ी पुरानी है, शंकर से लेके आज तक। अवधेशानंद जी, अगर कभी आप उनको सुबह सुने, उनकी जो पावर ऑफ लैंग्वेज है और जो पावर ऑफ आइडियाज़ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक बार कहा, व्यक्ति का धर्म अर्पण, समर्पण और तर्पण। हमारे समाज में बहुत सुंदर शब्द हैं। अर्पण, मैंने कहा मुझे ये करना है, मैंने अपने आप को दे दिया। फिर समर्पण, पूरी शक्ति लगा दी, और जब वो हो गया तो उसका तर्पण कर दिया, इदम नमम। ये मैंने अपने लिए नहीं किया। और समाज का धर्म हमारा, अवधेशानंद जी बता रहे, समाज का धर्म उत्सव, उपवास और उपासना, ये 3 चीज़ें हमारी देश, पर्टिकुलरली हमारी माताओं बहनों को बांधती हैं। उत्सव, उपवास, उपासना। हम सनातन धर्मी लोग उस शक्ति के साथ कई तरह से जुड़ते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ते। मैं किसी भी मंदिर में 1 मिनट से ज़्यादा आंख बंद नहीं रख सकता। मेरे में इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं आंख खोल के देखता हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं। पर सोमनाथ के मंदिर में मैंने काठियावाड़ी लेडीज़ को आधा आधा पौना पौना घंटे आंखें बंद करके ताली बजाते हुए नगाड़े के साथ पूजा अर्चना करते देखा। तो हमारा एक धन्ना भगत की कहानी है। वो एक पत्थर, वो जाता था रोज, तो पंडित जी कृष्ण भगवान की सेवा करते थे। तो धन्ना भगत जाट था, उसने कहा, पंडित जी ये तुम्हारा भगवान कोई काम भी करता है कि सिर्फ भोग ही लगाता रहता है? तो बोले, अरे ये तो सब कुछ यही करता है। अच्छा, सब करता है? तो ऐसा है, मुझे 2 दिन के लिए दे दो, 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरी ज़मीन बड़ी सख्त है, बैरन है, मैं हल नहीं जोत पाता। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ। पंडित जी चालू थे। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, वो जो तुम्हारी कृष्णा गाय है ना, वो मुझे दे दो, कल सुबह आना और मैं तुम्हें भगवान दे दूंगा। वो गए अगले दिन, और एक पत्थर उसने पकड़ा दिया उनको, और वो सर पे उठा के घर गए और वाइफ से कहा कि जरा धो दे, जगह धो दे, यहाँ स्थापित कर दिया। हाँ, और उसने कहा अब तू तो मूर्ख है, गाय दे आया ये। अरे अरे भगवान है ये,
भगवान को लाया हूँ, और रखा दिया वहाँ। उसके बाद चल दिए, उसको बोले इसको भोग लगा के फिर मुझे खाना देने आना खेत में। भोग लगा के। अब वो ज़रा रियलिस्टिक थी, उसने खाना बनाया, कहा खा ले पत्थर के आगे। 4 बज गए, वो धन्ना भगत क्या खाना नहीं पहुंचा, तो वो वापस घर गया। तो उसने कहा तू खाना नहीं लाई? बोले तेरा पत्थर खाना नहीं खाता, जिसको मैं खाना नहीं खिलाया कैसे करूं? मैं कहा नहीं तूने ठीक तरह नहीं किया। और बैठ गया उसके सामने कि देख प्रभु कृष्ण, तू खाना खा ले, तू अगर नहीं खाएगा मेरा तो कुछ नहीं जाना, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी कि तेरे में जो शक्ति है, और मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक तू खाना नहीं खाता। और ये ओरल नैरेटिव है, फोक। पत्थर फटा, भगवान कृष्ण निकले, उन्होंने कहा अरे भगत खिला, क्या खिलाता है? और खिलाया। उन्होंने कहा हुआ क्या, होता क्या था उसके बाद? सुबह लोग जाते थे तो वो देखते कि धन्ना भगत का खेत जुत रहा है, और धन्ना भगत पड़ों पे बैठा हुआ है और पूरा खेत जोत दिया। और दूसरे किसान बड़े परेशान कि क्या हो गया। तो उसने कहा कि अरे नहीं, वो तो भगवान कृष्ण करते हैं, पर उनको तो धन्ना भगत ही दिखता था। ये एक नैरेटिव है हमारे फेथ का। आपको अपने तरीके से भगवान के साथ जुड़ना है। हम तो वैसे भी मानते हैं, हमारी तो कैफेटेरिया अप्रोच है गॉड की तरफ। आप नहीं मानना चाहते मत मानिए। 1 में मानना है ब्रह्मन है, 2 में मानना है सीताराम राधे श्याम, 12 हैं, 51 हैं। आपने कुछ नहीं मानना। आप पत्थर ले आओ नदी से, रोली लगाओ, 20 साल उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप भी प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे उसमें, वही भगवान बन जाएगा। आप एक किसी का विग्रह या फोटोग्राफ चाहे कैलेंडर से काट के जहाँ बैठते हो, जहाँ से आते जाते हो, उसके सामने लगा लीजिए। रोज आते जाते उसको नमस्कार करिए 15-20 साल, तो उसमें एक शक्ति आ जाएगी। और आपको कई बार अनुभव होगा कि आप में एक सिद्धि आई है, पतंजलि के योग सूत्रों वाली। उस सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर होता है। मैटर तो करते हैं, मैटर इसलिए करते हैं कि दे आर सिंबल्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और जो भी इन्वेडर आता था वो 3-4 काम करता था। सबसे पहले मंदिर तोड़ता था। आपकी छाती के ऊपर दलन करने के लिए पैर आपका मंदिर तोड़ता था। मंदिरों के चारों तरफ ब्राह्मण रहते थे, उनका वध करता था। 5 साल से ज़्यादा उम्र के लड़कों का वध करता था, क्योंकि ये 4 साल बाद लड़ेंगे हमारे से। लड़कियों को उठा के ले जाते थे और मिडल एज मैन विमेन को प्रिजनर्स बना के उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद में ले जाके बेचते थे। अभी भी वहाँ रिकॉर्ड्स हैं कि इंडियन मेल कितने का बिकता था, ये सब होता था। फिर भी हम ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि हमारे देयर वॉज नॉट ए ईयर, देयर वॉज नॉट ए प्लेस वेयर सम किंग और द अदर वॉज नॉट फाइटिंग फॉर धर्म। ये धर्म का पार्ट था। मंदिर को बचाना धर्म का पार्ट था। जो कम्युनिटी अपनी औरतों, अपने आस्था के केंद्र या अपने ज्ञान की रक्षा नहीं कर सकती, वो कम्युनिटी खत्म हो जाती है। पर हम खत्म नहीं हुए, क्योंकि हमारे एक से एक वॉरियर्स ने पूरी जी जान से रक्षा की है। देखिए वो क्या उनका है निराला जी का कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए,
युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा प्रताप का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। एक एक मोमेंट लड़ते थे, लड़ते रहे। मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, मैं 75वीं साल की कमेटी का मेंबर था ना जी, तो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, डिफेंडिंग फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सेलिब्रेटिंग फ्रीडम। खूब बनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको सर्कुलेट करने की, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नॉट IGNCA, नथिंग, नोबडी। जब आप भाई साहब इतने बढ़िया आपने फैक्ट्स दिए, ये हमारे मंदिर ले लिए, हमारा पैसा छीन लिया, इसका जिम्मेवार कौन है? हमें। हम लोग सोचते हैं कि कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके, आर्टिकल लिख के, बातचीत करके हम कर लेंगे। हमें शत्रु बोध नहीं है। शत्रु बोध है हमको बजाय ये करने के, हमको सुप्रीम कोर्ट को सराउंड कर लेना चाहिए, हमको पार्लियामेंट को सराउंड करना चाहिए और कहना चाहिए कि 1 साल के अंदर 91 का एक्ट, 95 का एक्ट वक्फ बोर्ड वाला और 58 वाला हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इनको आप वापस करिए। 80% होते हुए हम लोग रोते ही रहते हैं, अरे हमारे मंदिर ले लिए, हमारे पैसे छीन लिए। कसूर किसका है? हमारा है। हम देखिए, अल्बेरूनी ने गजनी के साथ आया था, अल्बेरूनी ने लिखा है कि हिंदू हमारे से 3 तरह से अलग हैं। 3 तरह से। हिंदू झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। दूसरा, हिंदू मौत से नहीं डरता। तीसरा, हिंदू को अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार है। आज हिंदू सच नहीं बोलता, कहता है भैया मैं बाल बच्चेदार हूं, मेरे से सच ना बुलवाओ। और आज हिंदू अपनी मौत से क्या डरना है? 7 जनरेशन के लिए गलत ठीक तरीके से पैसे इकट्ठे करता है ताकि वो खाता रहे। और ज्ञान तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ज्ञान तो सारा वेस्ट में था। किसी भी सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटीज में सिलेबस निकाल लीजिए, रीडिंग लिस्ट निकाल लीजिए, किसी में भी आपको अपना ग्रंथ नहीं मिलता। NEP बना ली, IKS का सेंटर बना लिया, इतने लोगों को डायरेक्टर बना दिया, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दे दी, हाँ, जगह दे दी, उसमें कैबिन बना लिए, पर एक भी टेक्स्ट नहीं बदली। नॉट वन टेक्स्ट हैज बीन चेंज्ड। तो हम लोग, माओ सी टूंग ने, मैं सर को बता रहा था, माओ सी टूंग ने नेहरू के जमाने में कहा, हिंदू लोग आर टॉकिंग काउज, बातें करने वाली गाय। ये बातें करते हैं, हम बातें करते रह गए, पंचशील, शांति, और वो धीरे धीरे आपकी ज़मीन लेते गए, तिब्बत ले गए, अरुणाचल ले गए, अक्साई चीन ले गए, है ना सर। इसलिए इस वक्त जो क्षात्र धर्म चाहिए, समझिए ना सर, इस वक्त ये इंटेलेक्चुअल जो एफर्ट है ये काम नहीं करेगी। और सर सबसे बड़ी बात ये, भाई साहब आपके, मेरी बेटी बहुत कम मंदिर जाती है, 44 साल की है, पर जब मंदिर में घुसती है ना, बैठती है, तो उसे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो कभी कोशिश नहीं करती कि मैं मूर्ति के पास जाऊं, मैं पंडित जी के दर्शन करूं। उसे इतना भाव होता है, उसका भाव, कि वो रोने लग जाती है। तो मैं उसको रोकता हूं कि अरे छोड़, यहां क्या करेगी जाके। तो फेथ इज नॉट ए ट्रेड। भगवान के दर्शन करना या भगवान के पास जाना ये व्यापार नहीं है कि हमने इतने पैसे दे दिए तो हमको पहले दे, जैसे तिरुपति वगैरह में लोग करते हैं। मैं तो तिरुपति भी गया, मैं 7 घंटे बैठा रहा वो कॉरिडोर्स में, बड़ा अच्छा लगा। पहुंचे वहाँ,
उन्होंने कहा चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो गया। तो मैटर ऑफ, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ट्रेड। अब देखिए, हमारा दो लेवल, एक तो बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल है, सर ने भी समझाया, इन्होंने भी समझाया, इन्होंने तो खैर फैक्ट्स समझाए कि आपने इंटेलेक्चुअल, उन्होंने भी समझाया कि लर्नेड जो है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भगवान के साथ उसके ऊपर मेडिटेट करना, वहाँ अंदर बैठ के आंखें बंद करके बैठना, ये सब है, ये एक लेवल है। दूसरा लेवल बड़ा मोटा है। हरियाणा के जाट को मैंने पूछा कि भाई तू हिंदू है? बोले हाँ। तो क्या है हिंदू होने का, क्या मतलब है? बोले कुछ ना, कृष्ण की पूजा, मंदिर नहीं तोड़ना और गाय नहीं काटनी, बस, दिस इज हिंदुइज्म। कृष्ण की पूजा, मंदिर नहीं तोड़ना और गाय नहीं काटनी, ये है धर्म उसके लिए। और जब आप इसमें मंदिरों के, हमारे मंदिर जो हैं वो सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जितना आपकी क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी टेम्पल आर्किटेक्चर में है, किसी एरिया में नहीं है, किसी एरिया में नहीं है। अब मैं आपको एक और थोड़ी, देखिए, सरकार तो, हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार पे निर्भर करते हैं, थोड़ा हमको सरकार से हट के, जो भाई साहब ने कहा ना कि वो क्या ब्रज के मंदिरों का बनाओ, सबका बनाना चाहिए। एक कर्नाटक के मंदिर में जब वो पैसा लेने गया सरकार का आदमी, तो पुजारी ने कहा पहले वो जो मस्जिद है ना वहाँ से पैसे लेके आ, फिर दूंगा। हमें तो महात्मा गांधी ने बड़े सिविल डिसोबीडियंस सिखाई, टैक्स नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो अब हम करें ना कि हम नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट का जब तक गवर्नमेंट हमारे मंदिरों को रिलीज नहीं करती। एवरीबडी शुड रिफ्यूज पेइंग द इनकम टैक्स। नहीं देते, नहीं देते इनकम टैक्स, हमारा मंदिर रिलीज करो। तो एक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। एक्शन जो है वो हमें थोड़ा कुछ समझाएगा। मैं, देखिए, बंटवारे के बाद, हम पंजाब में कभी इंडिपेंडेंस नहीं कहते, बंटवारा, जब देश बटा, उसके बाद, बंटवारे के बाद हमको जो भी सरकार आई उसका एक ही ध्येय था, इस देश को डी हिंदुआइज करना है, इस देश को में से हिंदू धर्म निकालना है। उन्हें बहुत तरीके लगाए पर निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया। अगर 1100 साल इस्लाम नहीं निकाल सका तो ये छोटे मोटे कांग्रेसी क्या निकाल लेंगे, है ना? कितना निकाल लेंगे लोगों में से। योर रियल स्ट्रेंथ इज रूरल इंडिया। मैं 4 साल एक लड़कियों के विश्वविद्यालय हरियाणा में रहा। अपराइट गर्ल्स, टोटली अनसेल्फ कॉन्शियस, क्लियर आइड, ब्यूटिफुल। आप देखते हैं कि उनकी रेसलर्स, उनकी बॉक्सर्स, उन्होंने तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता, है ना? वहाँ पे हर गांव में छोटा सा मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर होता है एक, और अपना लोग आते जाते हैं अपना सारा। वहाँ पे वेदशाला भी होती हैं, वहाँ पे लोग हवन भी करते हैं, ये करते हैं लोग। तो धर्म हमारे यहाँ बड़ा व्याप्त है, हम किसी भी एक चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। इसीलिए क्योंकि हम कॉन्ग्रीगेशनल नहीं हैं तो एक बम हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई एम वेरी हैप्पी कि देयर आर सर्टेन सिस्टम्स विच आर कॉन्ग्रीगेशनल, वहाँ बड़ा आसान है। समझ रहे हो ना कि कॉन्ग्रीगेशनल में बड़ा आसान है। एक बार जेएनयू में जेएनयू में इंटेलेक्चुअल्स बहुत होते हैं ना, बुद्धिजीवी,
बुद्धिजीवी को आपने परिभाषा सुनी है ना, बुद्धि बेच के जीविका कमाते हैं। बुद्धिजीवी तो जेएनयू में बहुत होते हैं। तो एक बार बड़े इकट्ठे हो रहे थे, धीरेन्द्र शर्मा हुआ करते थे, आप लोगों को याद नहीं होगा। वो ना न्यूक्लियर बम के अगेंस्ट थे और हर वक्त वो समागम करते थे कि न्यूक्लियर बम के इसके। एक बार मैं और गेल साहब हम जा रहे हैं, मुझे गेल साहब कहते हैं वो धीरेन्द्र शर्मा वो फिर न्यूक्लियर बम के पीछे पड़ा हुआ है। तो चलो चलते हैं। हम भी जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि सर आप भी कुछ बोलिए। तो गेल साहब ने कहा हमको ना ही बुलवाओ। कहते नहीं बोलो। तो गए। कहते हैं मैं तो पहले के धीरेन्द्र मुझे ये बता कि न्यूक्लियर बम ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता। और मैं तो मानता हूँ कि न्यूक्लियर बम बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे हम इतने इकट्ठे हैं ना, एक बम पड़ जाए तो इस देश की बड़ी भलाई होगी। यू नो वी आर हैव ए, मैं अभी आपको पूरा क्या आपको कभी मिलेगा तो वो मिल जाएगा आपको। यू कैन ट्रेस द सैक्रिफाइस, द सैक्रिफाइस, द valor and the sacrifice with which the Hindus have defended themselves, and they are the only survivors. We are the only people who stopped the onslaught of Islam. खत्म हो गया था सारा। और इन्होंने अहल्याबाई का किन्होंने नाम लिया, अहल्याबाई का। अहल्याबाई ने मंदिर बनवाया हट के यहाँ, जिसको आजकल सारा बनाया है। उसके ऊपर सोना महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया। अब ये देखिए देश की एकता। गुरु गोविंद सिंह ने जब 5 प्यारे, उन्होंने कहा कि मुझे आदमी चाहिए जो अपना सर दे दे धर्म के लिए, तो जो पहला आदमी था वो जगन्नाथपुरी का था, दूसरा आदमी बिदार का था, आंध्रा का, तीसरा आदमी द्वारका का था, और चौथा आदमी मेरठ का जाट था, और 5वां जाके पंजाबी हमारी कम्युनिटी का भल्ला था, 5वां। तो पूरे देश में मतलब इस देश की, ये देश को डिफेंड करना है, धर्म को डिफेंड करना है। अब देखिए कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे। और जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी विल लिखी तो उसने कोहिनूर का हीरा जगन्नाथ मंदिर के नाम लिखा, जबकि महाराजा रणजीत सिंह सतलुज से इधर कभी गया नहीं था। क्यों लिखा? ये मैंने कई हिस्टोरियंस को, सरदारों को भी पूछा। इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह के कहने पे जो पहला व्यक्ति था वो जगन्नाथपुरी का था, उसने जगन्नाथपुरी का था, इसलिए उन्होंने उनको दिया। तो हमारे जिनको हम आजकल सिख एम्परर कहते हैं, ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर, महाराजा रणजीत सिंह, एंड ही फॉट। और हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में द लास्ट ग्रेट थिंकर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स गुरु नानक, जिन्होंने लोक भाषा में वैदिक ब्राह्मण के ज्ञान को, एक जो मूल मंत्र है उनका, दैट इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण। हमने अपने ज्ञान को बचाया है, इसलिए हम बचे हैं। और द लास्ट ग्रेट थिंकर हु डिफेंडेड द इंडियन थॉट इज गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने एक तो लिखा अकाल स्तुत, अकाल स्तुति इज द लॉन्ग पोएम ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्राह्मण। जो अद्वैत में हैं उनको पता है कि किस प्रकार एक अनेक कैसे हो जाता है, एक ब्राह्मण, और उसमें काल का क्या रोल है। क्यों फिर बाबा नानक ने ब्राह्मण को अकाल कहा, वो समझेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का अकाल स्तुत लिखना इंडिया हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ कितना बड़ा ग्रंथ है।
और फिर उन्होंने भागवत पुराण को, भागवत पुराण के 10वें स्कंद को गुरुमुखी में, पंजाबी में कथा पगौती दी, भाखा दियो बनाए, भाषा में बना दिया। और उनके फॉलोअर्स सुन के, देखिए ये 17वीं शताब्दी की बात है, आपकी अवच्छिन्न अविरल संचयात्मक ज्ञान परंपरा और इसकी वो क्या, वीर रस की परंपरा अविरल अवच्छिन्न और संचयात्मक रही है, इसलिए बचे। मंदिर हमारा सिंबल है, इसलिए जब भी वो आते थे वो मंदिर तोड़ते थे, उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे, पर हम भी उनकी मस्जिद तोड़ के फिर मंदिर बनाते थे। 5 बार तो यही ज्ञान वापी, ये जो है राम मंदिर, 4-5 बार तो वही टूटा, 7 बार सोमनाथ का मंदिर टूटा, 7 बार फिर बनाया गया। सो when I used to talk about history to my mother, because I didn't go to school up to class 5, troublesome time थे 47 के, तो मुझे इतिहास कई कुछ पढ़ाती थी, बहुत कुछ पढ़ाती थी। तो इतिहास में मैंने कहा पुरातन, हमारा जो आजकल का इतिहास है मॉडर्न, कहते आजकल का क्या है, राजे बदलते थे, रियाया नहीं बदलती थी। पहली बार हुआ कि रियाया बदली। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। और मिडीवल हिस्ट्री, वो मंदिर तोड़ते रहते थे, हम मंदिर बनाते रहते थे। फिर सो इसलिए इतना डिस्पिरिटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इतनी दुर्दशा है नहीं। इस वक्त भी आपके इतने विशाल मंदिर बन रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, भगवान देखिए, नवम पर्व जो है महाभारत का, उसका द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है, तुमने धर्म का रास्ता अपनाया, तुम्हें मिला क्या? ये जंगल में बैठे हो, चावल खा रहे हो। और दुर्योधन को देखो, मखमल पे बैठा है, वो कहता है धर्म भी जानता हूँ, वो धर्म भी जानता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चांदी के बर्तनों में खाना खा रहा है। तुम्हें और तुम्हारे भाई भी धर्म के, तो तुम मुंह नीचा करके निकले कौरव सभा से, और ये भी अपनी आंखें नीचे कर, एक एक में इतनी शक्ति थी, कौरव सभा को पलट देते, पर ये भी निकल आए, क्योंकि ये भी धर्म के पुजारी हैं। तो तुमको मिला क्या? युधिष्ठिर का जवाब है, जो लोग धर्म का रास्ता ये सोच के अपनाते हैं कि मुझे मिलेगा क्या, वो धर्म के व्यापारी हैं। दे आर ट्रेडर्स इन वर्च्यू। जी, तो इसलिए मैंने कभी धर्म का रास्ता ये, इसलिए मैं जब मंदिर जाता हूँ सर, तो मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि मुझे क्लोज जाके दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि मुझे कोई प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी शांति, अद्भुत शांति मिलती है वहाँ बैठ के। कृष्ण मंदिर द्वारका में गए, वहाँ जाना ही बहुत है, वहाँ बैठना ही बहुत है, वो एक समय में, एक वक्त में। दूसरी तरफ ये है कि भागवत पुराण को खुद घर में बैठ के पढ़ना, वो भी एक अलग चीज़ है, वो अपनी अलग चीज़ है। हमारा जो भगवान से संबंध है वो कई प्रकार का है, और हम कई तरह से अपने धर्म को निभाते हैं, इसलिए हम खत्म नहीं होते। Thank you so much, sir. It was a wonderful summary of not just the facts, but also the sentiments that all the speakers had spoken. And now I think Neera Mishra ji would like to kind of conclude the entire program. Thank you. I just would like to thank, but before I thank you, I have 2 pertinent information, if you do not know, Dr. Ranganathan ji and everybody here, which needs attention. When I made this program, conceptualized this program, I used to hear a lot you and Sai Deepak and many others. I have been fighting a very stupid battle, I would call it, because sitting in Delhi and doing this and not succeeding. There are 2 temples inside Purana Killa. In 1914, when the Britishers were trying to create the imperial city here, they dug out the ancient designs of Indraprasth. We have revenue records of 1877, we have maps, etc. And they conceptualized this. And in order to do that,
there was this area called the Indraprasth Pargana, of which we have several inscriptions, right from Raisina Hill to Narayana to everything. Inside the Purana Killa was a concrete habitation. When they were removing these habitations, 2 inscriptions of temples were found over there. One relates to Raja Bhoja, the Gurjara Pyare tribe, and the other relates to another king called Sohan Lal. It's not a king, sorry, he was King Sohan Lal, and he was also helping traders and all that. He buys a house, and that house he puts on rent in order to take care of those 2 temples within Purana Killa. ASI has been fighting a battle trying to remove the Kunti Mandir from Purana Killa. Nobody knows about it, it's been going on. And there was this concerted attempt by ASI, INTAC, and whoever they are over there, the people. They changed the name of that notification of 1911 of the Britishers when they removed all the habitation. They named that place as Purana Killa, but in bracket they write it is Indraprasth. So they tried to remove that and made it into Deenpana. That we fought, and the Deenpana is sort of removed and they've got Trimna. But my contention is the temple. When there is a proof, archaeological proof, there is a temple there, why should they fight a legal battle to remove the only temple? My question to them was answered by that one monument should have only one culture represented. Is India a country of one culture? Does India only have a trunk and not a root? So that is one important aspect I would like you to consider, how we can actually fight this out. Second important thing is, government is secular, it doesn't religion. You have said it so well. There is a monument, I don't know if I call it a monument, because if ASI is funding it, it is not a protected monument under the Archaeological Survey of India, something called the Jama Masjid. Crores and crores of rupees are being given annually to maintain that building. Why? Are these not questions we taxpayers should ask? And when I conceptualize this whole program of Temples Matter, my contention is that we would like intellectuals, I would not call you intellectuals, बुद्धिजीवी भी नहीं बोलूंगी आपको, but people who have really worked hard to dig out facts and to dig out the wrongs that have been done, and we want to work out a solution how to bring all these temples under one umbrella so that, see, the Gurdwaras have a system, the Jains have a system, the Christians have a system, and of course these people have a system of their own. They don't go to court. Here, for any little thing, we have to go to the court. Can we not work out some sort of a system where we bring all the heads of all the prominent mathas and everything and bring them under an umbrella so that we form a consolidated, as you said very rightly, a temple, they should become, they should be like earning money on their own and using their own money. So we have to work out a system on that. So these are things that are worrying all of us, but we need to find a solution. Professor Kapoor has said, you go and ghirao the Supreme Court. I mean, is that a practical solution? If that is the only practical solution, we probably have to work on that. I don't know. I mean, I need support and guidance, because I am very disturbed about Purana Killa Mandir. I am very disturbed that all the money from our mandirs is going to the wrong people. And so please, this is why I wanted to sort of work out, because if we're talking of Hamare Granth, Hamara Itihas, the custodians of those Itihas has been the mandirs. Do we not save those mandirs from being further misused, destroyed, and the money siphoned off? Instead of helping our community, we are just, that money is going God knows where.
So that was the background. I wanted to highlight these two important facts. Very few people know about this, that there were two very important mandirs inside Purana Killa, which the government is destroyed. The inscriptions of these mandirs are there. It's documented. Again, like this Qutub Minar, they were put on the steps of the Talaki gate, the inscriptions, and then when this Ram Mandir stuff happened, they quietly removed the inscriptions from there, and we don't know where they are. And my almost 15 years of trying to get it out, nobody knows. Where do we hunt? Where do we hunt? I said, it's documented, so you have to have some place to be keeping. So I'm sorry, I'm keeping everybody waiting on this, but I would really sincerely like to thank all of you for taking out time, being with us on this momentous occasion of our 20th year. And as we would like to just repeat for the sake of Dr. Anand Ranganathan and Professor Kapoor, we started this with an inaugural program by Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, and we had that program was titled Indraprasth Talks on shared heritage legacy. He talks with ambassadors on shared heritage legacies, because since we were celebrating the Vasudeva Kutumbakam, what is it that makes us a Kutumbakam? There has to be some shared heritage legacies, and the deeper we go into history, we do realize that there is a lot of commonality in the way we looked at life, and in the way we did our worship, in the way we follow rituals in many countries. So that was the first one, and it was such a pleasant surprise that the Honorable Speaker did not even touch on G20 and C20. He was so fascinated that there is something being done to understand and unearth the history of our women who have been so badly misrepresented in our nation. So that was a very enriching experience. We had about 15 ambassadors coming. They all shared lunch with us. It was a very small half-a-day program. And then, of course, 2 days we had Hamare Granth, Hamara Itihas. Yesterday we did Kavya Sandhya. We wanted to also honor Kavya, because all our Granths are written in Kavya. So Kavya is a very important medium for us to have remembered those, that the way that it was oral transmission was very much facilitated by Kavya. And today we wanted to do the temples, because temples are the custodians of our history and culture, and of course to quite an extent the economy. So now we need all of you to give us a guidance, to give us some points to follow, and how do we take this forward? Because as Professor said, just conferences and talking is just a start. We're just sowing the seeds today. Let's do something more, and let's work out a plan for this more. So thank you so very much, Professor Kapil, for honoring us by being here and enlightening us with your valuable knowledge. You have such a wonderful way of saying it so lightly, but you says things of such much depth. And Dr. Ranganathan, as always, I have been admiring him, and I was wanting that I would like to hear him firsthand and share with him this pain that we are going through. How do we save our temples, and how do we get them out of the government clutch? And Sampath ji, what a wonderful surprise to be here. We met in Kashi at the Sanskrit Utsav, and he was very, very kind. Thank you so much, Sampath ji, for being with us, and you gave us such a wonderful talk today. And of course, Niluttapal Da has been very closely associated with the trust. His wife is also very integral to our trust. And we thank you so much for taking out time. In spite of being such an important government official, he's always there when we need him. He's the Director General at the CAG. And Mr. Ranjeet Chaturvedi, of course, being from Mathura, and I'm also having a Mathura temple called the Mahavidya Temple. We do worship to Vidya. Thank you so much, Mr. Chaturvedi, for being here and sharing your views. Of course, you went in a tangent for whatever reasons, but it was well said. Thank you so much.